Very good evening, everyone. Am I audible to everyone? Yes, please. Yes. Thank you. Thank you so much. So again, a warm welcome and a very good evening to all dignitaries, all organizers and esteemed faculty members and all delegates presented in today's live session of 3-month certificate program on Research Methodology and Biostatistics. We again welcome our today's resource person, Dr. Purushottam Kumar sir, Assistant Professor from the Department of Community Medicine, M.D.B, Autonomous State Medical College, Deoria, to continue the session 4 on study design, the last session on study design, that is hybrid study design and its measure. Please, sir, welcome, sir. Sir, you are muted. Okay, sorry. Am I audible now? Yes, audible, sir. Welcome, sir. Again, welcome. What about the PPT? Yes, visible, sir. Okay. Thank you. So, good afternoon, everyone. So, today's topic is hybrid study design and its measure. So, first, let's see what is hybrid design. Sir, PPT is split into two parts. First time it is visible in slideshow mode, and now it's in two parts. Notes window is also there. Okay. So, okay, just now it's okay. No, perfect, sir. Perfectly, sir. So, what is hybrid design? So, it's nothing but it combines the element of at least two basic designs or extend the strategy of one basic design through the repetition. Mainly, it is of two types, like case cohort or nested case control, which we commonly heard. So here we are mixing the two design, like cohort and case control. So that is called hybrid design. Let's see. So two popular hybrid design are the case cohort study and the nested case control study. Both these design combines elements of cohort and case control. Both there is slight difference between the case cohort and nested case control. We will see. But if there is a third design, a more recently developed hybrid design called the case crossover design. So broadly, three design. There are three hybrid design. First is case cohort study design. Second is nested case control, and third is case crossover design. तो mainly हम लोग इसी पे discuss करेंगे one by one. First is nested case control. As the name suggests, nest means jal. From that that word comes from. So the nested case control study is also called as density type of case control. We will see later why it is called density type of case control and why it is called also the nested. So there is meaning in the presentation of the graph. We will see. So nested case control study is also called density type case control study, and it is a variation of case cohort study, the second type of hybrid design. So nested case control study are not very different from the classical case control study. It is similar to case control study, but actually the design is cohort type. They have a special name because the way they are conducted. A nested case control study is a case control study situated within the prospective cohort study. Actually, the study is cohort, but we make a nest in that cohort and do the case control study. The actual meaning of case control study is the prospective cohort study generates cases and potential control for the
nested case control study. This provides a well-defined source population from which the cases and control both are arising. Just consider the cohort study. If there is a cohort, from that cohort we taking the cases and the control. Whenever a cases occur, a control can be selected from among the cohort member who do not have the disease at that point of time, providing a firm procedure for control selection. We will see by the example, so don't worry. By assessing exposure in the case group and in a sample of the non-case group, that is control, the nested case control approach applies the familiar efficiency of the case control design. It is often more efficient to properly select a subset of eligible cases rather than the whole group of the eligible cases. इसमें क्या देखते हैं, in the cohort study we are analyzing the whole population, either it is in the case group or in the control group, but here is not the case. Let's just see by the example. So first is, see the right hand side, the disease occurring for every case of single disease. We are taking a control. For each case there is control. जब भी case आया during the entire follow-up period, when a case appear at the same time, we are selecting one or two control. Okay, the cases here, in cases having the disease and in control not having the disease. For every case you select one control or you may select two control also. But here is the point. When you are selecting 5 cases, for that you are selecting 5 control, but that control is also eligible for becoming the case. If that control gaining the disease, then that control become the now control. So a crisscross, the control is moving towards the case. So a net like appearance is appeared. That's why it is called nested case control and the density sampling. So this is the actually design of the nested case control study. See here. In the picture E, I think it is clear or not, I don't know. So first there is a defined cohort. A cohort है आपके पास. Now when the cases develop, think in the first year, a case develops. At that time, you correspondingly take a cohort from the take a control from the cohort that is similar to cases but not having the disease. In the second year also one case come, correspondingly you take the control. Similarly for the picture F, G and H, same. जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं correspondingly आप उसी समय control select कर रहे हो. So this is the very clear in this picture. Okay, every year a case come, a corresponding control, and the control that have not developed the disease. But yes, if the control in the for example, in the first year you have selected control 1, but by coming to the third year, if that control is developing the disease, now this control comes into the case side. So that's why it is called nested case control. This form a nest-like appearance. A nested case control study examine the relationship between. This is just an example. There is 2 or 3 examples. This is the first one. A nested case control study examine the relationship between serum organ chlorides and breast cancer. What is the effect of chlorides on the breast cancer? In this study, the study subjects were drawn from a cohort of over 57,000 female member of KP Medical Care Program who went multiphasic examination in late 1960s. At that time, blood samples were collected and stored. See, here there is 57,000 female and blood sample of every female is collected at that time and stored. Now, the cohort was followed up to 1990, and 30 years they had followed that 57,000
population. In that period, 150 women who developed breast cancer during the follow-up period were then randomly selected and individually matched to 150 women in the cohort who had remained free of breast cancer. During that period, जब भी उनको breast cancer का cases मिल रहा है, at that time only they correspondingly select a control. Now, using the blood sample stored at baseline serum were compared between cases and control. Now they have already stored the 57,000 blood. So if they get how many cases? 150 cases. So correspondingly they have taken 150 control. So out of 57,000 samples, they have to study only 300. So that is the advantage or benefit of the nested case control. So they are now supposed to process only 300 samples out of 57,000. So using the blood sample stored at baseline, serum were compared between cases and control. This approach resulted in considerably less cost and effort in processing of laboratory specimen. So this is the benefit of nested case control. Now this is the example 2. Here in 1993 a density type or nested case control study was done. Here 5,000 telephone employee, they have collected the blood sample of that person, and over a period of time of 10 or 15 years or 20 years, they want to see how many person have developed the cancer, and what is the exposure here is the serum copper level. So they have taken the blood sample of that much of person, that is 5,000 person, and after follow of time they found that there is 133 cases. At the same time, when the first case appears, they take a corresponding 1 or 2 control for that cases. So overall, at final study, they have 133 cases and correspondingly 241 control. Now they have the blood sample of every patient. So this 133 cases and 241 control, they unfreeze the blood sample and see the serum copper level. Is there exposure of copper or not? And then do the study like the case control study. So what is the advantage? So this is efficient. That is, not all member of the parent cohort required the diagnostic testing. यहाँ सभी का करने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ जो केस और कंट्रोल हमने लिया सिर्फ उतना ही का स्टडी किया हमने. So study is flexible. It reduces information bias. That is, risk factor exposure can be assessed with investigator blind. And last is the reduces selection bias. Cases and control sampled from the same population. हम already जो control ले रहे हैं, that is from the same cohort. That is again the advantage. What is disadvantage? That reduces the power of the study as the sample size is reduced. So any hybrid study, either it is nested case control or case cohort or crossover, they have the less what you consider less power than the cohort study, but it is better than case control study. So it is in between the case control and cohort study. So when we want to summarize the what is nested case control. So in summary, the nested case control design is a variation of case cohort design in which controls are chosen using density sampling. In अभी देखेंगे हम लोग आगे, in case cohort we are not taking one by one sample, taking the control as a sub cohort. Second is density sampling requires that control to be matched to cases at the time of case diagnosis. When the first case is diagnosed, we have to take correspondingly the control. And what is the advantage of nested or density type control? Are at risk of same amount of time as its matched case. So even they are controlled, but they are at the risk of becoming the cases. So that is again the advantage. What is disadvantage? More prone to measurement error than the cohort study. So always it is
less accurate or than the cohort study, but it is better than the case control study. It is in between the two. So this is all about the nested case control study. Now coming to the case cohort study. What is that? In cohort study, it is a hybrid design that is less prone to bias than the standard case control design because of the way control are chosen. So it is better than case control study. A case cohort study uses a hybrid design that combines elements of cohort and case control study. A case cohort population is followed over time to identify new or incident cases of a disease. In a case cohort study, cases are defined as those participants of the cohort who develop the disease of interest, but control are identified before the cases develop. So there is a cohort that many of person develop the disease, that is the cases, remaining all are the cohort control. This means that controls are randomly chosen from all cohort participants regardless of whether they have the disease of interest or not, and the baseline data can be collected early in the study. In case cohort study design were proposed as an alternative to the nested case control. यहाँ पे nested case control में क्या है? For each person, each case you have to take the control, but here क्या है? Case आप develop होने देते हो, total 100 case develop हुआ, now we have to take the 100 control or 200 or 300 control, like that. So case cohort study requires only the selection of random samples named as sub cohort and all the cases. So let's see by the picture. ये जो line है मैं इसको clear करता हूँ in the picture, by the picture. See this one. So first there is a cohort, and in that cohort, if you can able to see, there is red, that is cases, and in the black is the control. So in that cohort you select a sub cohort. See, in sub cohort only one case is there in sub cohort, but in the remaining cohort, at many places there are red color, that means there is cases. So for analysis, data analysis, you take all the cases, what is in the sub cohort and what else in the whole cohort. So जितने भी cases होते हैं आप सबको लेते हो, but जो आप control लोगे, so that is taken from the sub cohort only. ठीक है? So this is the case cohort study. Here आप one by one नहीं ले सकते, या आपने सब cohort एक ले लिया, that is for the control, और जितने भी overall cohort में जितने भी disease हो रहे हैं सबको आप एक साथ लोगे as a case. So this is called case cohort study. Now, what is study design for case cohort? There is defined cohort. Then you follow for the 5 year. First year case 1, case 2, case 3 year में कोई भी case नहीं है, 4 year में, like that. At the end of the 5 year there is 5 cases. So you have to take 5 control from the cohort. You can say sub cohort. Now see, this is the example. This is the example of case cohort study. So in a study, there is a cohort of 9,775 men. They all are worker in industry, and the study was like seeing the gastric cancer. So at the start of the study, the person has collected the blood sample of all the 9,775 men and freeze it in the freezer. Now, after 5 years, they check the cancer register, जो बोलते हैं हम लोग cancer register, उसमें they found there is 29 cases of gastric cancer. Now, for that cases, that is at the end of the 5 years, they found 29 cases, and for that 29 cases, they correspondingly select 220 controls. Okay. Now they have already freeze the sample for the
all the 9,775 men. So they take the unfreeze the blood sample of 29 cases and 220 controls, and then see the exposure of H. pylori. At the initial time, they are infected with the H. pylori or not. So this is the example. So in cases H. pylori present or not present, in 220 control, H. pylori present or not present. So this is the example of case cohort. Now this is the design of case cohort study. So there is question for you here. If you understand the case cohort or case control. The question is, first question, what is the timing of this study? That is, it is prospective or retrospective. And second question, what is the directionality of the study? That is forward or backward. I think you are very aware with the timing and directionality. So you can answer. I'm unable to see the chat box. Anil can help me in that. Yeah, even you can unmute or tell me. What is the timing of the study? If considering the previous example, so it is prospective or retrospective case cohort study. Anyone unmute and tell me. Prospective and forward, sir. Sorry? Prospective and forward, Ali. Prospective and forward. Okay. Yes. Any other answer? Yes, actually, yeah. Any other answer? So see, it is the mixture of case cohort studies. So yes, the study design like the cohort कि हमने start किया और blood sample लिया उनका, and so a study is started at the time of taking the sampling, and we going for the disease. So the no doubt the timing is prospective. What about the directionality? It is forward or backward? It is backward. Backward, yeah. क्योंकि हमने यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन जब हमने स्टडी तो ठीक है मैंने सैंपल लिया है बट आई डोंट नो ना कि एक्सपोजर है या नहीं है. अभी डिजीज हो गया, डिजीज होने के बाद नाउ भी अनफ्रीज, तब हम जा रहे हैं बैक, जैसे केस कंट्रोल में हम लोग जाते हैं ना कि हमने पहले केसेस ले लिया, डिजीज हो गया, अब उसके करस्पॉन्डिंग हम केस के पास जाते हैं, केस उसका कंट्रोल ढूंढते हैं और उसमें देखते हैं कि एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है. सिमिलर लाइक ना केसेस मुझे पता चल गया कि केसेस आ गए हैं, कंट्रोल है, अब ठीक है कि मैंने सैंपल रखा है पहले से, अब हम वहां पर जाकर के देख रहे हैं कि एक्सपोजर है या नहीं है. तो हेयर इज द डायरेक्शनलिटी इज बैकवर्ड. दैट वाई ना इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ. अगर कोहॉर्ट है देन द प्रोस्पेक्टिव एंड फॉरवर्ड, बट इट इज मिक्सचर ऑफ case control and cohorts. That's why here is the timing is prospective and directionality is backward. I think it is clear. Yeah. So what is the advantage of case cohort study? So we can study different diseases like a different set of cases in the same case cohort study using the same cohort for the control. Okay, but this is not the case for the case control study. In this design, in contrast to the nested case control design, cases and controls are not matched on calendar time and length of follow-up in a study. Instead, exposure is characterized for the sub cohort. नेस्टेड में हम क्या करते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग कंट्रोल लेते हैं, बट इसमें वैसी बात नहीं है. सो व्हाट इज द समरी ऑफ केस कोहॉर्ट स्टडी? सो केस कोहॉर्ट, it is a hybrid design. It is a hybrid study that combines feature of both case control and cohort design. In a case cohort design, controls are sampled from the original cohort. Cases are new or incident cases of the disease, जो कि हम लोग cohort में मिलता है मुझे. Controls are chosen from the source population from which the cases derive.
Several diseases can be studied in contrast to case control study. Case control हम at a time single disease study कर सकते हैं, but यहाँ पे multiple disease study कर सकते हैं. A smaller number of non cases than in cohort study. यहाँ पे हमने केस के corresponding जितने कंट्रोल लिए हैं उतने ही, जबकि कोहॉर्ट में हमें सारे जो कंट्रोल हैं जितने भी कोहॉर्ट में सबका एनालिसिस करना होता है. More prone to measurement error than the cohort S. There is more error corresponding to the cohort study, and it is more expensive than case control. It is more expensive than case control, but less expensive than the cohort study. So overall अभी तक जो हमने डिस्कस किया, nested case control and case cohort design are efficient in term of cost and can be used to evaluate the relationship between exposure and the disease. ये अभी तक जो हमने ये स्टडी डिजाइन किया, क्यों किया? क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए. ठीक है. Compared to the nested case control design, the case cohort design is more efficient and allow an investigator to study several disease outcome by using the same random sample. So this is few question for you. If you all understand the case cohort and nested case control, so there is few question, then we go for the case crossover. So your answer is like case cohort, nested case control, both or neither. There is 4 options. So first question, it is usually less expensive than the prospective cohort study. What is the answer? Case cohort, nested, or both or neither? What is the answer? Anyone unmute and tell me? Dr. Kritika wrote in the chat box case cohort. Dr. Pooja wrote that nested control. Okay, why I am not saying? Okay, no issue. Yeah. No. So answer is here both. It is both is case cohort and nested control. Both are less expensive than the cohort study. Not only the case cohort or nested case control, both are less expensive than the cohort study. Next question. Comparison group from same population as cases. कंपेरिजन ग्रुप फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन एज केसेस, जहां से हम केस ले रहे हैं वहीं से कंपेरिजन ग्रुप भी ले रहे हैं. केस कोहॉर्ट में, नेस्टेड में, बोथ, नाइदर. Amit ji, you can help if the answer in the coming in the chat box. Just waiting in the chat box. Yeah. Comparison group from same population as cases. Dr. Pooja wrote both. Dr. Yes. Vivek wrote case cohort. Yes. No. Dr. Lovely Srivastava wrote nested case control. No. Again, the answer is both. Because again, in nested case control, initially we have selected the cohort. That's why we have taken this question. If you don't understand the basic concept between the things, then you can't understand the hybrid design. So in both nested as well as case cohort, पहले क्या करते हैं? We have make a what do you call cohort. जैसे both are cohort study, और उसमें हम क्या करते हैं? Modify करते हैं उस cohort study को. तो both cohort है, हमने स्टडी शुरू किया, एक cohort बनाया. अब क्या करते हैं? हम उसको just waiting for the disease. In nested case control में हम लोग क्या करते हैं? मान लो एक केस हुआ, at the same time we are taking the control, but वो control कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? From the same population, from the same cohort we are taking the control. And in the case cohort group, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? We are waiting for 5 years, and at that time we see, yes, there is 20 cases. So at that time, for corresponding to that 10 cases, we take 10 control or 20 control or 30 control. But from where? From the same cohort. So comparison group for same population. So both में हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? Same. दूसरी जगह से control नहीं रहे हैं. So here again answer is the both.
usually less expensive than case control study? Now, tell me. Case cohort, nested case control, both or neither? Case control से less expensive. Amit ji? Yeah, Dr. Weber sir wrote that neither. Neither, yes, yes. Now you are on the good track. Thank you. From Dr. Lovely Srivastava is neither. Yes, yes, neither is correct. क्योंकि case control is less expensive, then hybrid design, then more costly is the cohort one. Yeah. Respective timing. Now, you are taking the control at respective timing of the case. So that is the prompt. What is the answer? Anyone? Dr. Mamta wrote nested case control. Dr. Weber sir wrote nested case cohort. No, not cohort. Answer is the case Dr. control, nested case control. क्योंकि nested case control में ना हम लोग एकदम सेम टाइमिंग पे जिस टाइम पे केस आया उसी के रिस्पेक्ट में हम कंट्रोल लेते हैं. So that is the difference between case nested and nested case control and cohort study. Nested में one by one जिस समय केस आया उसी समय हम कंट्रोल ले रहे हैं. But cohort में क्या है? We are waiting for the last end of the study. और टोटल अगर 30 केसेस आए हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हम 30 कंट्रोल लेते हैं. कंट्रोल इज selecting at the end of this study. मतलब when the cases appear. So that is the case cohort. उसमें end पे लेते हैं. But respective time पे कब लेते हैं? केस नेस्टेड केस कंट्रोल में. ठीक है. या बैकवर्ड डायरेक्शनलिटी किसमें होगा? हम लोग डिस्कस किए थे ना बैकवर्ड डायरेक्शनली. Dr. Lovely wrote case control. केस कंट्रोल इज नॉट द ऑप्शन. केस कोहॉर्ट और नेस्टेड केस कंट्रोल बोथ. Dr. Sunil Kumar wrote retrospective study, and Dr. Pooja wrote case control. Dr. Mamta case cohort. Your choice is case cohort study, nested case control, both or neither. See the first paragraph. You have to answer among these only. बैकवर्ड डायरेक्शनलिटी किसमें होगा? केस कोहॉर्ट, नेस्टेड केस कंट्रोल, बोथ, नाइदर. Nested case control. Dr. Kritika both. हाँ, आंसर इज द case बोथ. ठीक है. क्योंकि दोनों में हम क्या करते हैं, आ रहा है स्टार्टिंग में हमने सबका ब्लड सैंपल लिया है दोनों में. अब क्या कर रहे हैं, जब फाइनल हमारा एंड ऑफ द स्टडी आया तो जब केसेस कंट्रोल बोथ आए तो हम बैक जा करके फिर उस ब्लड सैंपल को देख रहे हैं कि उसमें एक्सपोजर फैक्टर है या नहीं है, अदर एज पैलोरी और जो भी सोडियम हम लोग लेट पॉइजनिंग सब देख रहे थे. तो इन बोथ डायरेक्शनली इज बैकवर्ड इन बोथ बिकॉज ना बोथ आइदर नेस्टेड केस कंट्रोल और case cohort both are combination of case control and cohort study. Next question. I think एक दो सही है तभी तो मैं आगे बढ़ूं. Controls match to cases at the time of diagnosis. What is the answer? Controls match to cases at the time of diagnosis. Nested or cohort? Nested case control or case cohort? Dr. Mamta wrote nested case control. Dr. Kritika wrote nested. Yeah, good. Dr. Lovely nested case control. Yes. Okay, thank you. Next question. Compares exposure experience of cases versus control. Nested case control या case cohort या both. From Dr. Mamta and Dr. Lovely both wrote both. Yeah, the answer is both. Good. Now it is clear for everyone. Density sampling.
For which study we use the term density sampling? Yeah, Dr. Mamta. Case Case cohort. cohort. No. It is nested. Nested. Density जो term use किया था ना, nested case control is also called density type of case control study. Dr. Seetal, Dr. Mamta, Dr. Yeah. Lovely all wrote nested. Yeah. Answer is nested. Yeah. Must have same number of control edge cases. Yes, ये question है फिर. Must have same number of control edge cases. किसमें दोनों स्टडी में किसमें है कि जरूरी नहीं कि इक्वल हो, कम भी हो सकता है. ये ज्यादा तो आप पे है बट कम भी हो सकता है. Dr. Mamta wrote neither. Wait for few more answer. Must have same number of control edge cases. Dr. Kritika wrote Nested. 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 Must have same number of control edge cases. No. मैं भी कंफ्यूज करेंगे आपका आंसर देख के. देखो नेस्टेड में क्या है ना, for each case you are taking the control, but that control is also having the chances to become the case. So here there is a chance that your control becoming the case. So यहाँ पे आपका केस कंट्रोल को कम होने के चांसेस है. अगर आप 1/1 ले रहे हो तो आपका जो केसेज है वो वहाँ पे कम हो जाएंगे. That's why जो must have same number of control edge cases ये आएगा आपका कोहोर्ट में, केस कोहोर्ट में आएगा. नेस्टेड में मस्ट नहीं हो सकता, वो कम भी हो सकता है आपका. ठीक है, तो हियर द आंसर इज केस कोहोर्ट स्टडी डिजाइन. ये क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ सर क्वेश्चन है सर, जो अभी आपने आंसर बताया उसमें भी तो सर हम पूरा एक सब कोहॉर्ट ले रहे हैं, तो वो सेम तो नहीं होता दोनों का नंबर. डिजीज वाला नंबर अलग था और सब कोहॉर्ट का अलग था. तो सर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कंट्रोल केसेस, जितने कंट्रोल तो इसमें भी नहीं हुए. तो सर दो मेरे ख्याल से नीदर होना चाहिए कि उसमें भी अलग हो सकता है, इसमें भी. नहीं देखो, मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कंट्रोल एज केसेस. ज्यादा तो ये जो केस कंट्रोल का स्टडी होता है उसमें आप केसेस और कंट्रोल 1:2, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 तक लेते हैं ना हम लोग. बट यहाँ पे क्या है, मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कंट्रोल. तो लेकिन यहाँ पे ये जो आपको मैं बता रहा हूँ नेस्टेड वाला, नेस्टेड में बिल्कुल नहीं भी हो सकता है ना. मान लिया आपका जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछने का ये है कि जो आपका कंट्रोल है, दैट कंट्रोल इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द केस. क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने उसको कंट्रोल में लिया ना, बट तीसरे चौथे ईयर आते आते हो सकता है उसको डिजीज डेवलप कर जाए. समझ में आ रही है? तो वहां पे क्या होगा कि आपका कंट्रोल कम हो जाएगा. मतलब ये पूछ रहे हैं कि इक्वल है कि नहीं, बस हाँ बिल्कुल. तो वो है कि बाकी तो आप ज्यादा अगर इवन है कि ज्यादा आप ले सकते हो, 1:1, 1:2. कंट्रोल का कोई ये नहीं है कि आपको किस रेशियो में लो, कंट्रोल आप कितना भी ले सकते हो. मैक्सिमम बोलता हूँ 1:4 तक भी लेते हैं, उससे आपका स्टडी का पावर इंप्रूव होता है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. चलो अब लास्ट क्वेश्चन भी ले ही लो आप. अगर आप समझ रहे हो तो इसको सही से आंसर करोगे. So suppose that at the time of enlistment in a military service, a sample of blood was, see this is the question, see carefully. Suppose that at the time of enlistment in a military service, a sample of blood was drawn from each enlistee and stored. जिसमें सिलेक्शन हो रहा था मिलिट्री का, सारे का ब्लड उन्होंने स्टोर किया. After the Persian Gulf War, some soldier develop a constellation of symptoms that came to be known as the Persian Gulf War syndrome. Okay? If investigator then examine the blood of all soldiers with the syndrome and blood from twice as many soldiers without the syndrome, this would be an example of, see now the choice, case cohort, nested case control, prospective cohort, retrospective cohort. मैं इस पे सही आंसर एक्सपेक्ट करूंगा. अगर मैंने इतना समझ में आया तो आप इसका सही आंसर करोगे. डॉक्टर मुक्ता, डॉक्टर वैभव सर wrote case cohort. Case cohort. Yes. अब आपको समझ में आ गया. Good. Thank you. So now the third one is the case crossover study.
So what is that? So case crossover study design is especially appropriate where individual exposures are intermittent, wherein the disease occurs abruptly and the incubation period for the detection and the induction period are short. So this is the criteria for a crossover study कि कब हम करते हैं. The individual serves as their own control. यहाँ पे कंट्रोल अलग से हमने लेते हैं. सेम पर्सन की शॉर्ट पीरियड का होता है ना, जब उसमें डिजीज हुआ दैट इज द केस, जिस ड्यूरेशन में उसका डिजीज नहीं है दैट इज द कंट्रोल. The case crossover design is primarily used for studying the etiology of acute outcomes such as myocardial infarction or death from acute event in a situation where the suspected exposure is transient and its effect occurs over a short time. एक एग्जांपल से देखते हैं इसको, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो लेट्स सी दिस एग्जांपल. पिक्चर क्लियर है? सी ए क्या आप देख रहे हो, जहां जहां पे हार्ट बना हुआ है दैट इज द इवेंट, दैट इज एमआई, मायोकार्डियल क्यों नहीं आ रहा है. ओके तो ए में आप देख रहे हो कि आपका इवेंट्स आया हुआ है, जो हार्ट्स है मतलब हार्ट शेप दिख रहा है ना, दैट मीन्स कि दैट इज द इवेंट. यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, वहां पे इवेंट दिख रहा है किस टाइम पे हुआ है corresponding. Now see the picture B. Here there is pink color shadow. So actually this is the study to see the effect of MI on bad air pollution. When the air quality is bad, what is the effect of MI? इफेक्ट ऑफ बैड एयर ऑन MI. ठीक है, अगर बैड एयर मतलब एयर पोल्यूशन है तो MI के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा कोई स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसका ये है. फर्स्ट इज द इवेंट, बी इज द व्हाट इज द शैडो पार्ट इज बैड एयर ड्यूरेशन ड्यूरिंग व्हिच द एयर क्वालिटी इज बैड. सी व्हाट इज सी द ब्रैकेट, सी द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट इज द केस ड्यूरेशन, दैट इज ड्यूरेशन during which cases occur. ठीक है, वो शो कर रहा है. और what is in the D? So the red bracket is in the C. There is bracket is red color. What is that? This is the case duration. And C in the D there is bracket of blue color. What is that? This is control duration. जहाँ रेड है वहां पे केस ड्यूरेशन है, जो कंट्रोल है वहां पे ये ब्लू कलर का जो ब्रैकेट है वो कंट्रोल ड्यूरेशन. ये पिक्चर में देखो आप क्लियर होगा, थोड़ा सा ये क्लियर दिखेगा. सो व्हाट इज हार्ट शेप इज द इवेंट, जब केसेस का इवेंट हुआ है. व्हाट इज शैडो, जो पिंक कलर का शैडो आपको दिख रहा है दैट इज वेयर द एयर क्वालिटी इज बैड. एंड व्हाट इज द रेड ब्रैकेट, रेड ब्रैकेट इज द दैट इज कॉल्ड केस ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में केस हुआ है. And what is blue bracket? It is the control duration where the everything मतलब things is under the control, that is patient is normal. So here you can compare, see the compare one, that is comparison between normal, जब आपका एयर पोल्यूशन नॉर्मल है मतलब एयर पोल्यूशन नहीं है, और दूसरे में भी एयर पोल्यूशन नहीं है बट एक में इवेंट होता है दूसरे में इवेंट नहीं होता. सो दैट इज द कंपैरिजन वन. व्हाट इज द कंपैरिजन टू? एक में इवेंट हो रहा है दूसरे में इवेंट नहीं हो रहा है बट एक में एयर पोल्यूशन है और दूसरे में जहाँ पे कंट्रोल हो वहां पे एयर पोल्यूशन नहीं है. सी थर्ड वन कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन जब एयर पोल्यूशन नहीं है दैट इज कंट्रोल वन, और जब केसेस हुआ है वहां पे एयर पोल्यूशन है. सो दिस इज द कंपैरिजन थ्री. सो देयर इज मल्टीपल कंपैरिजन हियर. सो this is about the design. This जो above design and findings of a hypothetical 4-month case crossover study of air pollution versus the MI. What is ABC जो हमने आपको बताया अभी. ठीक है, ठीक है. A is the time for development of MI. B में क्या था? Period of high air pollution. That is जो shadow हमने दिखाया था आपको. C is defining at risk period, that is red bracket, and D is defining control period. So what is advantage of
case crossover. This design eliminates the additional costs that would be associated with identifying and interviewing a separate control population. यहाँ पे आपको अलग से control लेने का जो खर्चा है वो आपको बच जाता है. What is this disadvantage? So it is the recall bias. That is the disadvantages. So this is all about the 3 study design, that is case control, estate case control, case cohort, and case crossover. So these are the references. This PPT is prepared from this one. So thank you everyone. And before your question, there is yesterday we have some left out question, no? So what is different question? Can anyone tell? Oh, okay, I have noted. So first question is about the quasi-experimental. One person has asked about what is quasi-experimental. So for that, we go to the last class, that is the जो हम लोग क्लिनिकल डिजाइन पढ़ रहे थे, स्टडी डिजाइन. उसमें देयर इज 4 एलिमेंट. व्हाट इज दैट एलिमेंट? मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडमाइजेशन एंड ब्लाइंडिंग. ठीक है. तो जब मेन क्लिनिकल डिजाइन होता है उसमें ऑल द फर्स्ट 3 इज द मेजर एलिमेंट एंड 4 इज द माइनर एलिमेंट. तो हम बात करेंगे फर्स्ट 3 का ही. तो जो आपका ये होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, उसमें आपका ऑल 3, देयर शुड बी मैनिपुलेशन, देयर शुड बी कंट्रोल, देयर शुड बी रैंडमाइजेशन. इफ अगर ये तीनों एलिमेंट है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल. व्हाट इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल? मतलब जब सारी चीजें ना हो, मतलब जो ये 3 मैंने बताया ना, मैनिपुलेशन, कंट्रोल और रैंडमाइजेशन, इसमें से एक हो या 2, मतलब तीनों ना हो. और उसमें मोस्टली क्या होता है, रैंडमाइजेशन ना हो. हमने क्लिनिकल ट्रायल के बारे में क्या उसमें डिस्कस किया था कि रैंडमाइजेशन इज द हार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, आरसीटी. बट अगर आपका वो रैंडमाइजेशन नहीं हुआ तो, और बाकी सब कुछ किया आपने बट रैंडमाइजेशन नहीं किया, दैट इज कॉल्ड क्वासी एक्सपेरिमेंटल. बट इज मतलब वो है एक्सपेरिमेंटल बट नॉट द नियर अबाउट द एक्सपेरिमेंटल, दैट इज कॉल्ड क्वासी एक्सपेरिमेंटल. बट इट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल. और जिसमें थर्ड क्या है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, जिसमें कि तीनों में कोई भी नहीं हो, मतलब ना ही मैनिपुलेशन हो, ना ही कंट्रोल हो, ना ही रैंडमाइजेशन हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल. व्हाट आर डिफरेंट पॉइंट रिगार्डिंग द क्वासी एक्सपेरिमेंटल? कि दिस ओनली हैव 1 or 2 डिजाइन एलिमेंट, मतलब हैव मैनिपुलेशन और कंट्रोल, जनरली लैक रैंडमाइजेशन, इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता है, एंड आर जनरली प्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड आर मोर मॉडरेट इन साइंटिफिक. बोल तो नहीं सकते कि हाइब्रिड है, बट इसको बोल सकते हो कि आप क्या बोलते हैं इसको, क्लिनिकल ट्रायल में आप रैंडमाइजेशन हटा दिए, जिसे कैसे कर रहे थे उसमें कोहॉर्ट स्टडी में, बीच में हम उसको केस कंट्रोल कर दिए. तो इसी में अगर आप जो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो उसमें यू आर नॉट डूइंग द रैंडमाइजेशन, देन इट बिकम द क्वासी एक्सपेरिमेंटल. So first question, I think it's clear, a quasi experiment. Now one question was कि intention to treat analysis, वहां से क्वेश्चन था कि जो लॉस ऑफ फॉलो अप हो गया उसका हम क्या करेंगे. तो उसमें फिर क्या होता है कि देयर इज द, मतलब आप हायर स्टैटिक्स में जाओगे, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है हायर में, उसमें देयर इज टर्म मेथड कॉल्ड सर्वाइवल एनालिसिस. तो वहां पे हम जो पर्सन टाइम होता है वो देखते हैं कि जो पर्सन है कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे स्टडी में रहा है. ठीक है. और उसके लिए कैल्पेन मेयर मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल अप्रोच ये सब यूज करते हैं. सो वी आर गोइंग टू लर्न इन द हायर साइंटिफिक सेशन में कि व्हाट इज द सर्वाइवल एनालिसिस. वहां पे आपको एनालिसिस के लिए यू कैन यूज दैट वन, दैट इज सर्वाइवल एनालिसिस. एक क्वेश्चन था व्हाट इज डबल ब्लाइंड डबल डमी डिजाइन. तो एक क्या होता है कि कोई भी वैसा स्टडी आप जो करना चाह रहे हो, यू वांट टू कंपेयर बिटवीन फॉर ए ड्रग, इफ यू वांट टू कंपेयर कि इसका इंजेक्टेबल फॉर्म बेटर है या कैप्सूल फॉर्म या जो ड्रग फॉर्म मतलब टैबलेट फॉर्म है वो बेटर है. अगर ऐसा आप कोई स्टडी कर रहे हो तो वहाँ यू आर यूजिंग द डबल ब्लाइंड डबल डमी
डिजाइन, इसमें क्या करते हैं कि दो ग्रुप बनाते हैं. फर्स्ट ग्रुप इज फॉर इंजेक्टेबल, सेकंड ग्रुप इज फॉर द टैबलेट. तो इंजेक्टेबल ग्रुप में आप इंजेक्टेबल, पहला जो आपका होगा वो इंजेक्टेबल होगा जिसमें कि एक्चुअली ड्रग होगा इंजेक्टेबल, और दूसरा जो होगा उसमें प्लेसिबो होगा इंजेक्टेबल फॉर्म में, आइदर नॉर्मल सलाइन और लाइक दैट. सो फर्स्ट ग्रुप हो गया जिसमें आप बोथ इंजेक्टेबल, ड्रग का इंजेक्टेबल जिसमें ट्रीटमेंट मतलब ड्रग है, एक्चुअल ड्रग एक्टिव एजेंट है, और दूसरा प्लेसिबो. दूसरा जो ग्रुप है आपका टैबलेट का है, उसमें आप टैबलेट दे रहे हो जिसमें एक्चुअल जिसमें एक्टिव एजेंट है, और दूसरा प्लेसिबो दे रहे हो जिसमें कि वो एक्टिव एजेंट नहीं है. तो दैट इज, और ब्लाइंडिंग तो है ही वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल ब्लाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पे ना तो पार्टिसिपेंट ना इन्वेस्टिगेटर, दोनों में कोई भी नहीं जान रहा है कि किस इंजेक्शन, मतलब किस इंजेक्शन वाले में भी उसको नहीं पता है कि कौन सा मतलब प्लेसिबो है, कौन सा एक्चुअल ड्रग है, और टैबलेट वाले में भी उसको नहीं पता है कि विच इज एक्चुअल ड्रग और विच इज प्लेसिबो. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डमी. यहाँ दो डमी है, दो प्लेसिबो है, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल blind double dummy design. I think it's clear now. Am I clear for everyone? And if it is okay, then you can ask the question for today's class. Yeah. Yeah. Ask the question. Unmute yourself and ask the question. No question? All delegates, I allowed everyone. Having any doubt, you can ask. No question means either आप सब समझ लिया या कुछ समझ में नहीं आया. Yeah, no, this is difficult topic, but okay, you can ask me later also. If not this time, go and read this one, and you can ask me in the next time. Dr. Kritika wrote in the chat box one query. Yeah. What is black box design and anthropographic study? What is black box Design I don't and know. anthropographic study. No, anthropographic, that is qualitative study. वो तो qualitative का part है, but black box I don't care about that term. No, first you ask in the question with the hybrid, na, today's topic only. Hybrid, black box I don't know about that. सर ब्लैक बॉक्स स्टडीज ज्यादातर जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं आयुर्वेदा वगैरह इनमें ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है. Okay. सर उसमें ये होता है कि एक मेडिसिन को हम ट्रायल करने की बजाय एक एज अ पूरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन मींस अगर मान लो हमें डायबिटीज के लिए we just want to study do Ayurveda have any kind of effect on the patient of diabetes. So Yeah. उसमें सर मतलब एक सेलेक्टेड चीज ना लेके एज अ होल इंटरवेंशन कि आयुर्वेदा में ये मेडिसिन दी, ये कुछ चेंज किया डाइट में, एज अ होल उसको चेक करते हैं कि वो इफेक्टिव है या नहीं. तो Okay, सर okay. उसे ब्लैक बॉक्स डिजाइन कहते हैं. Okay, तो सर ज्यादातर वो आयुर्वेदा वगैरह में ज्यादा यूज किया Okay, जाता है. okay, okay. मीन्स सर बेसिक आइडिया ये है, वैसे अभी अच्छा, मुझे अच्छा. भी अच्छे से याद नहीं है पूरा. तो जी सर. Thank you. That's Thank why you, I Dr. don't heard about that. Okay, thank you. Mamta. Thank you. I hope Dr. Kritika you get answer. Dr. Mamta provide the answer of your query. Yeah. Thank you, ma'am. Any other question related to today's Any topic? other question regarding hybrid study design? You can write. We are open just 1 more minute. If there is any query, you can write. You can unmute yourself. Namaste, sir. Yeah. Sir, two more hybrid study designs are there. One is umbrella study design and one is platform study design, sir. Kindly enlighten about those, sir. Again, we don't heard about that design. Because the hybrid design, These two are new study designs are developed perhaps 4 to 5 years ago, sir. Okay. I don't heard about that design. Yeah, mainly, actually, hybrid design is used very less. और उसमें भी जो तीन है, that is more common is this one only.
और क्या है, बेस्ड researcher ना modified based on their feasibility or what is difficulty, they modifies the study according to the मतलब कि जो भी उनका प्रॉब्लम आ रहे हैं स्टडी में उसको दूर करने के लिए they modified our study and they give the different name for that study. So there is मोस्टली हमारे आयुर्वेद में जो फील्ड है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जो क्लासिकल स्टडी डिजाइन्स हैं जो कि मॉडर्न को सूट करते हैं, हाँ वो हमारे डिजाइन को जो मतलब स्टडी डिजाइन को मतलब पूरा प्योरली सूट नहीं करते हैं। नहीं करता है, दैट्स वाई ना। तो और मैं थोड़ा सा उस वाले में नहीं हूँ करके तो थोड़ा ज्यादा आ रहा है आप लोग का, और अलग अलग स्टडी डिजाइन है। दैट वही बोला ना कि कोई भी आप स्टडी डिजाइन कोई स्टडी करते हो जहाँ पे प्रॉब्लम आने लगते हैं तो आप हम लोग कोई भी उसमें एक सोल्यूशन ढूंढते हैं कि क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि स्टडी करना है तो फिर वी आर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। ऑल्दो वी आर नोटेड कि हमने ये मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि जब फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आप उसके बारे में बताते हो कि भाई मैंने यहाँ पे दैट इज लिमिटेशन ऑफ माय स्टडी इज लाइक दैट। तो ये है, तो ब्रॉडली हाइब्रिड में यही है। और एक डाउट था सर, जैसे हम नॉर्मली क्रॉसओवर डिजाइन लेते हैं, हाँ वो पर्टिकुलरली वन पॉइंट ऑफ द टाइम हम जो भी पेशेंट्स होते हैं या जो भी हेल्दी वॉलंटियर्स हैं उनको उनका जो हम पैरामीटर्स नोट कर रहे हैं उसको नोट करते हैं, तो उसमें कुछ मॉडिफाई करके मैंने पेपर्स देखा है जिसमें सर क्रॉसओवर ट्रायल तो होगा उसमें, लेकिन पर्टिकुलरली उसके साथ एक ऑब्जर्वेशनल पीरियड भी रहेगा, जैसे 1 मंथ उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, मतलब दोनों मिक्स रहता है। क्रॉसओवर भी पर्टिकुलर जैसे 1 पॉइंट ऑफ टाइम में उन्होंने पहला रीडिंग ले लिया, फिर उनको 1 मंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन से रीडिंग लिया या 2 मंथ ऑब्जर्वेशन में रीडिंग लिया, ऐसा भी मिक्स डिजाइन ऐसे अवेलेबल हैं सर क्या? ओके ओके ओके, थैंक यू। Okay, thank you sir. Thank you everyone for wonderful queries and discussing all topics. So thank you very much, sir, for continuously delivering two important sessions in this program. Thank you so much, sir, for your time and expertise sharing in this program with all delegates. Thank you so much, sir. All delegates, tomorrow we move towards the sampling topics. There are 4 sessions on sampling: probability sampling, non-probability sampling, and then 2 topics on the sample size estimation. So again, the important sessions will deliver from tomorrow onwards. So be on time at 6 p.m. as scheduled time. The first session tomorrow, that is on probability sampling. So thank you everyone for presence in this live session. Thank you for listening patiently and discussing queries with our respected resource person. So this is the end of today's session. Thank you everyone for joining.